पूपस्पृश्यात्। ॐ अच्युताय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। पूपस्पृश्यात् शुभं करोति कल्याणम्। आयु आरोग्य संपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपदेवी नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां। कुर्वे गन्तारवं तत्र देवताह्वानलाञ्छनम्। ॐ कण्ठस्थिताय गरुडाय नमः। पुष्पं गृहीत्वाथ संकल्पः। श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये प्राणनायम्य। ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों तदेव लघ्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दयाबलं तदेव लक्ष्मीपते गौरीपते त्यङ्घ्रियकं स्मरामि शुभे शोभने मुहूर्ते द्वितीय परार्धे श्वेतवराहकल्पे सप्तमे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोकान्तर्गत उत्तरअमेरिकाखण्डे क्यानडा देशे एजाक्स नगरे संकटमोचन श्री हनुमान मंदिरे शुभे दिन शोभने मुहूर्ते येषां यजमानानां टेक योर नेम्स इन योर माइंड्स प्लीज। ओम लोका समस्ताः येषां यजमानानां सहकुटुम्बस्थानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय आयु आरोग्यम ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्तमंगलावाप्त्यर्थं समस्तदुरितोपशान्त्यर्थं चिन्तितमनोरथवाप्त्यर्थं सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं सर्वारिष्टशान्त्यर्थं श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थं श्री वीर हनुमत प्रीत्यर्थं धर्माटकामोक्षं चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं अद्य अहं महागणपति पूजनम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती पूजनम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र पूजनम श्री राधा कृष्ण चंद्र पूजनम सदाशिवलिंगाभिषेकाराधनं च करिष्ये इति संकल्प्य अपोपस्पृश्यात्। श्री गणेश ध्यानो। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत नृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि आवाहयामि। ओम पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यमाचमनीयम् शरीरे स्नानं च समर्पयामि। श्री गणेशाय नमः। अर्चना। ओम सुगंधपुष्पैः संपूजयामि। ओम महागणाधिपतये नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम एकदन्ताय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम गजकर्णकाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम धूम्रकेतवे नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम फालचंद्राय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम वक्रतुंडाय नमः। ओम हेरंभाय नमः। ओम स्कंदपूर्वजाय नमः। नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
ओम शांति शांति शांति। ओम लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षारात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानो शिष्यम् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। श्री गणेशाय नमः। समस्तोपचारान् समर्पयामि। श्री गणेश प्रार्थना। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। मूषिकवाहनमोदकहस्ते चामरकर्णविलम्बितसूत्र वामनरूप महेश्वरपुत्र विघ्नविनायक पाद नमस्ते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अथ श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्रम्। मोदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कराधरावतं सकं विनाशिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितभदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। न ते तरतिभीकरं न बोधितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकावधूधरम्। सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्। समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यपुञ्जरं दरेदरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरम्। कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्। अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोद्विभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम्। प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम्। ऋतान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्दतम्। हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनः तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम्। महागणेश पंचरत्नमाधरेण योऽन्वः प्रजल्पते प्रभातिके हृदि स्मरं गणेश्वरम्। अरोगितां
सुतोषितां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सुचिरात् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः नमः। वेदोत्रमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए गणेश भगवान की जय। श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती पूजनम्। दुर्गा देवी ध्यानं पुष्पं गृहीत्वा ॐ विद्युदाम समप्रभा मृगपतिस्कन्धस्थिता भीषणाम् कन्याभिकरवालकेतविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदे शिखेत विशिखां शापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। जगदम्बा दुर्गा देवी नमो नमः। ध्यायामि आवाहयामि महालक्ष्मी नमः। ध्यानम्। ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह महालक्ष्म्यै नमः। ध्यायामि आवाहयामि महासरस्वत्यै नमो नमः। ॐ मेधा देवी जषमाणा नागा दुष्वाचि भद्रा सुमनस्यमाना महासरस्वत्यै नमः। ध्यायामि आवाहयामि पाद्यम्। ॐ जातवेदसे स्वनवाम सोममराति यतो निरहाति वेदः स नः पर्षरति दुर्गानि विश्वानावेव सिन्धुन्दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। सुतरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गानि विश्वा पूश्च पृथिवी बहुला नौर्वी भवातोकाय तनयाय संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धुर्ननावा दुरितातिपरिषि अग्ने अत्रुण्मनसा गृणानो अस्माकं बोध्यविता तनूनां पृतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगं हुवेम परमा सधस्तात् स नः पर्षरति दुर्गानि विश्वाक्षा मद्देवोऽति दुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमीड्यो अध्वरेषु स नश्च होता नव्यस्य सत्से स्वाञ्चाग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभागमायजस्वा गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तं तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमविसम्बसानो वैष्णवीन् लोक इहमादयन्ताम्। ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अर्चना। ॐ दुर्गायै नमः। ॐ माहेश्वर्यै नमः। ॐ शिवप्रियायै नमः। ॐ मन्दारवासिन्यै नमः। ॐ अर्कायै नमः। ॐ गिरिसुतायै नमः। ॐ धात्र्यै नमः। ॐ महामायायै नमः। ॐ स्कन्दमात्रे नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमो नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि।
ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ प्रकृत्यै नमः। ॐ विकृत्यै नमः। ॐ धनप्रदान्यै नमः। ॐ गृहलक्ष्म्यै नमः। ॐ भोगलक्ष्म्यै नमः। ॐ सन्तानलक्ष्म्यै नमः। ॐ वीरलक्ष्म्यै नमः। ॐ गजलक्ष्म्यै नमः। ॐ कुबेरलक्ष्म्यै नमः। महादेवे नमो नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। महासरस्वत्यै नमः। ॐ महावाण्यै नमः। ॐ वीणाधारिण्यै नमः। ॐ चतुरानन्दवल्लभायै नमः। ॐ ज्ञानप्रदायिन्यै नमः। ॐ श्रीप्रदायिन्यै नमः। ॐ यशप्रदायिन्यै नमः। श्री महासरस्वत्यै नमो नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। दुर्गा देवी नमः। महालक्ष्म्यै नमः। महासरस्वत्यै नमः। धूपदीपमहानिवेद्यम्। ॐ आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः। श्री दुर्गा देव्यै नमः। महालक्ष्म्यै नमः। महासरस्वत्यै नमः। सुगन्धधूपमाघ्रापयामि। धूपानन्तरमिरमाचमनीयं समर्पयामि। दिव्यमङ्गलदीपं याते हेतिर्मीरुष्टमहस्ते बभूवते दनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज। श्री दुर्गा देवी नमः। महालक्ष्म्यै नमः। श्री महासरस्वत्यै नमो नमः। दिव्यमङ्गलदीपं दर्शयामि। दीपानन्तरमिरमाचमनीयं समर्पयामि। सर्वरक्षान् धारयामि। नैवेद्यम् ॐ अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। ॐ महादेवे नमो नमः। अन्नं चतुर्विधं स्वादुरसैषद्भिः समन्वितं नैवेद्यं गृह्यतां देवी भक्तिमेह्याचलं कुरु। ॐ प्राणे स्वाहा पाने स्वाहा व्याने स्वाहा उदाने स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणिमात्मा। श्री दुर्गा देव्यै नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। महालक्ष्म्यै नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। महासरस्वत्यै नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यानन्तरमिदमाचमनीयं ताम्बूलानि च समर्पयामि। श्री जगदम्बायै नमो नमः। समस्तोपचारान् च समर्पयामि। श्री दुर्गा देव्यै नमः। महालक्ष्म्यै नमः। महासरस्वत्यै नमो नमः। ॐ दुं दुर्गायै नमः। अथ सिद्धकुंजिका स्तोत्रम। विचार कुंजिका स्तोत्रम सीखने ब्लेसिंग्स ऑफ माता जी। ओम शिववाच शृणुदेवी प्रभक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमं येन मन्त्रप्रभावेन चण्डीजापशुभो भवेत्। न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनं। कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत्। अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरेव पार्वती। मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनमुच्चाटनाधिकं। पातमात्रेण संसिद्ध्येत कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम्। अथ मन्त्रः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ग्लौं हूं क्लीं जुं सः
ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे ज्वालहं सं लं क्षं पत् स्वाहा इति मंत्रः। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनि जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तुते चामुण्डा चन्द्रघाती च एकारी वरदायिनी विच्चे चाभयरा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी धां क्रीं दुं दुर्जते पत्नीं वां विं वुं वागरीश्वरी क्रां क्रीं ग्रूं कालिका देवी शां शिं शुं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जं 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 भनादिनि भ्रां ह्रीं ह्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः अं कं चं तं पं यं यं शं विं दुं ऐं विं हं क्षं दिजागं त्रोते दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पिं पुं पार्वती पूर्ण खां खिं खुं खेचरी तथा सां सिं सुं सप्तशती दिव्य मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्चिका स्तोत्रं मन्त्रजागार्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्चिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोधनं यथा इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रेषु पार्वती संवादे कुञ्चिका स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जयकारा शेरावालीदा बोल साचे दरबार की जय। श्री रामचंद्र पूजन। दूर पूजा तो श्री राम हनुमान जी और राधा कृष्ण भगवान टुगेदर। श्री रामचंद्र ध्यान। ओम लोकाभिरामं जनरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। ध्यायामि आवाहयामि। वीर हनुमत ध्यानम्। ॐ यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। श्री हनुमते नमः। ध्यायामि आवाहयामि। रामदूताय नमो नमः। श्री राधा कृष्ण ध्यानम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः सवैः वेदैः साङ्गपरक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततर्गतेन मनसा
पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ध्यायामि आवाहयामि। श्री वेंकटेशाय नमः। सत्यनारायणाय नमः। बालकृष्णाय नमः। ओम कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। श्री बालकृष्णाय नमः। वेंकटेशाय नमः। सत्यनारायण नमः। श्री चक्रदेवे नमो नमः। तपाद्यं ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अथो जायायश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयपुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनान् शने अभि तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्य सीदाजं ग्रीष्मयुग्मशरद्धवि सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यज्ञन्तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रत तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्चे तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं पृषता च पशुस्ताश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः रुचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादत गावो हजज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौपाहु काबूरूपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरुतरस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखारिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोऽध्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमृषश्रोत्रात् तथा लोकागम कल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन्यरास्ते अर्चना
ओम रामाय नमः। ओम रघुनाथाय नमः। ओम नाथाय नमः। ओम सीतापतये नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम दशरथनंदनाय नमः। ओम ईश्वराय नमः। ओम परमात्मने नमः। नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि सीतादेव्यै नमः। लक्ष्मणाय नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि। ओम हं हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम राम भक्ताय नमः। ओम आंजनेयाय नमः। ओम महाबलपराक्रमाय नमः। ओम लंका विध्वंसिने नमः। ओम वीरवीराय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम अतिवीराय नमः। ओम जानकी शोक निवारणाय नमः। पंचमुखी हनुमते नमः। श्री राम परिवाराय नमः। हरमरस्त्राय नमो नमः। नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम अर्जुन मित्राय नमः। ओम सर्वाय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम कूर्माय नमः। ओम वराहाय नमः। ओम नृसिंहाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम मत्स्याय नमः। ओम कूर्माय नमः। श्री राधा देवी नमो नमः। नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि। ओम वेंकटेशाय नमः। सत्यनारायणाय नमः। बालकृष्णाय नमः। श्री चक्रदेवी नमो नमः। नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि। धूप दीप नैवेद्यम्। ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत रामचंद्राय नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। धूपमाघ्रापयामि। धूपानन्तरमिदमाचमनीयं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायथ मुखारिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत रामचंद्राय नमः। हनुमते नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। दिव्यमंगलदीपं दर्शयामि। दीपानन्तरमिदमाचमनीयं समर्पयामि। सर्वरक्षान् धारयामि। नैवेद्यम्। ओम नाभ्यासिरन्तरिक्षं कृष्णोऽध्यौ समवर्तता पद्भ्यां पुंसश्रोत्रात् तथा लोकागम कल्पयन्। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे। सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन्यरासेत्। धाता पुरस्ताच्च मुदा चहार। शक्रप्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति। नान्यपन्था अयनाय विद्यते। यज्ञेन यज्ञमयचन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ॐ नमो नारायणाय। नैवेद्यानन्तरविदमाचमनीयं समर्पयामि। इलालवङ्गकर्पूरताम्बूलानि समर्पयामि। सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। राधा कृष्णभ्यां नमः। इलालवङ्गकर्पूरताम्बूलानि समर्पयामि।
प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। हनुमान चालीसा गाएंगे, उससे हनुमान चालीसा वगैरह। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौं रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिर पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हारहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, आंधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम्हरो यश गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योताहि
के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न ज्ञान पैसारे, सब सुफल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असुवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चितना धरी, सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महाडेरा, की जयनाथ हृदय महाडेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। श्री सांब सदा शिवाय नमः। शिव पूजा करेंगे। नमः शिवाय देवाय सच्चिदानंदमूर्तये, नमो वेदांत वेद्याय योगिनां गुरवे नमः, योगिनां गुरवे नमः। ओम
सत्यो जातं प्रपद्यामि सत्यो जाता यवै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः श्री सांब सदाशिवाय नमः। ओम अस्य श्री रुद्राध्याय प्रश्न महामंत्रस्य अघोर ऋषिः अनुस्तुप छंदः संकर्षण मूर्ति स्वरूप योसावादित्य परम पुरुषस्य रुद्रो देवता नमः शिवायति बीजं शिवतरायति शक्तिः महादेवायति कीलकं श्री सांब सदाशिव प्रसार सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ओम अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः ओम चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः ओम निरूपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः ओम ज्योतिष्ठमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम सरकत्वात्मने करतरकर पृष्ठाभ्यां नमः ओम अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः ओम दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा ओम चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषट् ओम निरूपशुबन्धात्मने कवचाय हुम ओम ज्योतिष्ठमात्मने नेत्रत्रयाय भविष्यत् ओम सर्वकत्वात्मने अस्त्राय फट् भूर्भुवस्वरोमिति ऋग्बन्धः। ध्यानम् आपाताल नभस्थलान्तभुवन ब्रह्माण्डमा विस्फुरत् ज्योतिस्पातिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवान्तामृतैः अस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकान् जपन् ध्याये दीप्सितसिद्धये ध्रुवपरं विप्रोऽभिषिञ्चेच्छिवं ब्रह्माण्डव्याप्तदेहा भसितहिमरुचाभासमाना भुजङ्गैः कंठे काला कपर्दा कलित शशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ताः त्रक्षा रुद्राक्षमाला प्रकटितविभवा शाम्भवा मूर्तिभेदाः रुद्रा श्रीरुद्र सूक्त प्रकटितविभवा नः प्रयच्छन्तु सौख्यम्। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम शंच मे मयश्च मे प्रियंच मे नुखामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वशश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे तिथिश्च मे विश्वं च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोश्च मे पशोश्च मे सीरं च मे लयश्च मरुतं च मे अमृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सोषा च मे सुरिनं च मे। ओम शांति शांति शांति। Come for Abhishek, everyone. We come in a line, please. नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमण्यवतोते शवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यां तते नमः यातैषु शिवतमा। Come everyone. शिवतनुर्घोरा पापकाशिनी तया नस्तनवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशेः यामिशं गिरिशन्तहस्ते विभर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहिगं शिवपुरुषं जगत् शिवेन वत्सा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा न सर्वमिज्जगत् यक्ष्मगं सुमना असत् अध्यवोचररिवक्ता प्रथमो दैव्याभिषक् अहीगिश्च सर्वा आञ्जं भयं सर्वा आश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुणौ तव सुमङ्गलः ये चेमागं रुद्राभितो दिक्षुश्रुता सहस्रशो वैशाखं हेडईमहे असौ यौवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपादृशन्दृशन्दुरहार्यः उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृदयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अथो यस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वं वयोराट्न्योर्जां यास्य ते हस्तैषवपराता भगवो वपा अवतत्य धनुस्वगं सहस्राक्षसते शुधे निशीलशल्याणामुखा शिवो न सुमना भव
वे चन्दनकपर्जन विशल्यो बाणवागम्मुता अनीसनशेषवाभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मीरुष्टमहस्ते बभूव ते दनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय दृष्णवे उभाभ्यां ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् विनक्तु विश्वतः अथो ईशिधिः सवार्यस्मन्निधेहितं शम्भवे नमः। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। सांब सदाशिवाय नमो नमः। Please come again, everyone. We'll offer milk again this time. There's lots of milk inside. Please come again for the second Abhishek. Aye. Om Namah Shivaya. Samba Sada Shivaya Namo Namaha. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Brahma Murari Surarchit Lingam निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म च दुख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Deva Muni Pravararchit Lingam Kamadaha Karuna Karlingam रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ओम नमः शिवाय, 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 Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Sarva Sugandhi Sulepit Lingam Buddhi Vivardhan Karana Lingam Siddha Surasur Vandit Lingam Tat Pranamami Sada Shivalingam. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Kanaka Mahamani Bhushit Lingam Phanipati Veshtit Shobhit Lingam Daksha Suyagya Vinashan Lingam Tat Pranamami Sada Shivalingam. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya,
Om Namah Shivaya. 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 Kumkum Chandan Lepit Lingam Pankajahar Sushobhit Lingam Sanchit Papa Vinashan Lingam Tat Pranamami Sada Shivalingam. Om Namah Shivaya. 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 Devaganarchit sevit lingam Bhavar bhakti bhire vachalingam Dinkar koti prabha karlingam Tat pranamami sada shivalingam Om Namah Shivaya. 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 Ashtadalopari Veshtit Lingam Sarvasamudbhava Karana Lingam Ashtadaridra Vinashana Lingam Tat Pranamami Sada Shivalingam. Om Namah Shivaya. 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 Sura Guru Suravar Pujit Lingam Suravan Pushpa Sadar Chitlingam Parat Param Paramatma Kalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya. Om Namah 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 Shivaya. Lingashtakamidam punyam Yav pathe shiva sannidhau Shivalokam Shivena sahamodate. Har Har Namah Parvati Pataye. Har Har Mahadeva. Sada Shivaya Namaha. नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सागराना हो चरण हो राघव
स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो। लव कुश के जैसे संतान हमारी हो। लव कुश के जैसे संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी शबरी सी भक्ति हो। हनुमत के जैसे निष्ठा और शक्ति हो। हनुमत के जैसे निष्ठा और शक्ति हो। मेरे जीवन नया हो प्रभु राम कवैया हो। राम कृपा के सदा मेरे सिर पर छैया हो। राम कृपा के सदा मेरे सिर पर छैया हो। नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सागराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत रामचंद्राय नमः। हनुमते नमः। सौराष्ट्र सोमनाथं च सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं हुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रार्थपते नर सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय।
सदाशिवाय नमः। प्रसाद प्रसाद चढ़ाइए, जिसके पास प्रसाद है विल ऑफर प्रसाद। अंदर थाली है तो अपना प्रसाद थाली में रखकर फिर चढ़ाइए। नमः शिवाय। दोस्तों प्रसाद, प्लीज ऑफर योर प्रसाद एट दिस टाइम। महादेवाय नमः। श्री साम सदाशिवाय नमः। नमः शिवाय। मनोबुद्ध्यहंकार चित्ताहीनाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिरानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिरानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर्न वा पंच कोश न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञाः अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मा न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां
सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप श्री सांब सदा शिवाय नमो नमः। ओम घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम। ओम ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम। सर्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु पुरुषो वै रुद्रसन्महो नमः। विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ सत्योजातं प्रपद्यामि सत्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतरमणाय नमो मनोन्मनाय नमः। ओम शांति शांति शांति। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः शिवाय देवाय सच्चिदानन्दमूर्तये नमो वेदान्तवेद्याय योगिनां गुरवे नमः। आञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। ॐ श्रीवीर हनुमते नमो नमः। रामदूताय नमो नमः। आञ्जनेयाय नमो नमः। महाबलपराक्रमाय नमो नमः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। गाइए भाव से। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, गाइए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम नमः शिवाय, 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 कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, 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 नमः
सदाशिवाय नमः। ॐ रामचन्द्राय नमः। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत रामचंद्राय नमः। राधा कृष्णभ्या नमः। राम राम। विभीषण जी प्रभु श्री राम मिलने के लिए आए। Vibhishan renounced his relationship with Ravan and he came to meet Prabhu Shri Ram. But he had a doubt in his mind. मन में संशय था. Will Bhagwan accept me or will he judge me as the brother of Ravan? Sometimes, what do we find? If there is one bad person in a family, generally speaking, we tend to judge everyone. ये लोग पूरा परिवार अच्छा नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति पापी है. So Bhagwan, in this prasanga, Bhagwan made it abundantly clear. Not because Vibhishan ji was the brother of Ravan, he's a bad person. He was a bad person. His swabhava was totally different than that of his brother Ravan. So he came with his ministers and he came close to the camp of Sri Ram. Sugriva and all the other Bandara generals in Sri Ram's army, they captured him and held him as a prisoner. They kept him outside. He told them, "My Prabhu Sri Ram milne ke liye aaya hu. I'm here to meet Sri Ram." But they judged him. "No, you can't meet Sri Ram. You're the brother of Ravan. You're a spy. आप तो जासूस है, अंदर नहीं जा सकते." So they kept him as a prisoner outside. And Sugriva came to Prabhu Sri Ram. "Prabhu, Dushta Ravan Bhrata milne ke liye aaye hain. The brother of Ravan has come to meet you, Prabhu. Kya karu? What should we do?" Now Bhagwan answered. He answered and removed all doubts that they may have had. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. 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 भेद हमार लेन पट आवा, राखिए बांधी मोहि असभावा. श्री राम जय जय राम. 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 सखा नीति तुम्हनी की विचारी. सखा नीति तुम्हनी की विचारी. मम पद शरणागत भयहारी. मम पद शरणागत भयहारी. श्री राम जय जय राम. श्री राम जय जय
हमार लेन पठ आवा. Prabhu, he has come here to find out our secret. Don't trust him. राखी बांधी मोह कस भावा, राखी बांधी मोह अस भावा. We have kept him as a prisoner outside. What should we do? So again, Vibhishan, like every other human being, this is how we judge people. We look at them, we look at their background, we look at their status in society, and we come to a conclusion. But these are the words of Sri Ram. Sakha niti tuma niki vichari. My dear friend, you have debated this matter from a political point of view. O Sugriva, you have come to this decision based on a political point of view. मैं तो politics में नहीं हूँ. In other words, Bhagwan is saying, I'm not a politician. Mama pana saranagata bhayahari. Anyone who comes to me to seek refuge, I am there to accept them. So Vibhishan came there and he surrendered to Sri Ram. He wanted Sri Ram to accept him. He renounced his relationship. But when he came there, this doubt was in his mind. And after the doubt was in his mind, even he was judged by Sugriva as well. Will they accept me, Prabhu? Will they? Then Sugriva himself kept him as a prisoner outside. Bhagwan said, anyone who comes to me, I will accept. I know what do we find in the world sometimes? We judge people. This person's from my religion, this person's my culture, this person I know, I will accept this person. But Bhagwan is saying, my mamapan, my vow is anyone who comes to me for protection, I'll protect. He goes beyond religion, beyond race, beyond culture. Anyone who goes to Bhagwan, Bhagwan will protect them. But when we go, we have to do Sharanagati. We have to surrender totally. Now Hanumanji was in the company of them there. Hanumanji kuch bhi nahi kaha. Hanumanji stood there quietly and listened because Hanumanji knew who Vibhishan was. Remember when he went to Lanka? He burnt the entire Lanka with the exception of one home. So the palace of Ravan and every other home, every other building in Lanka was reduced to ashes with the exception of Vibhishan's home. So when we surrender to Bhagavan, it doesn't matter how much it pours or how much difficulties we may experience in life, His invisible hand is always there guiding us. We can't see it, but His blessings are always there. So Hanumanji knew exactly who Vibhishan was, but he didn't say anything. He knows his Prabhu Shri Ram. When Prabhu Shri Ram is speaking or when he in the company of Shri Ram, Hanumanji zyada nahi bolte. He doesn't speak too much. He allows Bhagavan to make the decisions. But in the absence of Bhagavan Shri Ram, that's why he's called Ramadut. When he is there and has to make a decision by himself, he will think of Prabhu Shri Ram, envisage Bhagavan in his heart, then he will make a decision. That is in Prabhu's absence. But he allowed Bhagavan to make the decision. Bhagavan said, Suni Prabhu Bachan Harash Hanumana. Suni Prabhu Bachan Harash Hanumana. Saranagat Bachal Bhagavana. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. 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 Hanumanji Suni Prabhu Bachana Harashi Hanumana. Hanumanji felt a tremendous joy in his heart having heard the words of Bhagavan Shri Ram, where Bhagavan says, Mama Pana Saranagata Bhayahari.
Having heard these words, Saranagat Vachal Bhagavana. How caring, how compassionate, how loving is Bhagavan Sri Ram, that anyone who comes to him is prepared to accept them. We look at the other doha. Saranagat kahu jet jahi, Saranagat kahu jet jahi, Nij anhit anumani, Nij anhit anumani, Te nar pavar paap mein, Te nar pavar paap mein, Tinhi dilo kathaani siyavat Ramchandra ki jai sharanam. Bhagavan Shri Ram ne kaha, anyone who forsakes a person who comes to seek the shelter of Bhagavan. Again, you don't judge people before we know them. Anyone who comes and seeks the shelter of Bhagavan, surrender to Bhagavan, and if someone turns them away, Bhagavan is saying such a person who turns the person who comes for shelter is a papi. We don't, sometimes people come to the mandir sometimes, and you don't know what's going on in their life. People come to mandir for many reasons. They come to give thanks to Bhagavan. They come to express their pain and suffering. You don't know what's going on in their life. Especially at places of worship, we have to be kind to everyone. Not only mandir, but all places of worship. So if people come with that bhakti, and if you come and one turns them away, or they come and have a bad experience, Bhagavan is saying the person who causes that experience is considered papi. Not a bhakta, because as bhakta we try our best to be nice to everybody. I know you may tell me, Panditji, some people are difficult. They come with a chip on their shoulder and this. No, but as long as you do your dharma, you treat them with love and respect, you have nothing to worry about. So Bhagavan is saying, those who forsake a bhakta from suspicion that he or she may cause them harm, such a person, Bhagavan is saying, is vile or despicable. Don't judge anyone. Be nice to them. Do your dharma. Now, Bhagavan, again, while he is speaking to Sugriva, he wants the entire world to know that in Hindu dharma, in certain situation, if you don't follow a certain kind of teaching, you're placed in hell. Isn't that true? To narak jayega. And if you subscribe to certain teaching, swarg jayega, you go to heaven. So this business of heaven and hell, even in our dharma, that's not the goal. But somehow we get carried away with this business of heaven and hell. Everybody, swarg jana. Everybody wants to go to heaven. And we heard of so many beautiful things in heaven. But don't waste your punya to go to heaven, pyare, because having exhausted them, you have to come back upon Mrityu Lok. Bhagavan says in this chaupai, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Koti Vipra Badhala Kahi Jaho, Koti Vipra Badhala Kahi Jaho, Aaye saran tajaho nahi paun, Aaye saran tajaho nahi paun, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram
Rama. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama. सन्मुख होई जीव मोहि जब ही सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघना सही तब ही श्री राम जय जय राम Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama. श्री राम जय जय राम Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama. श्री राम ने कहा भगवान makes a remarkable statement here. Listen to the words carefully of Tulsidas ji. Koti bibra badalaga chahu. If a person kills 10 million sadhus, मन में विचार करो. Think of the worst sinner you know. The worst individual you may have met in your life. Ai sarana tajahu nahitahu. If such a person, if a mahapapi or a mahapapi comes to me to surrender, to do sharanagati, I will never turn away such a person. ये तो भगवान की बात है. The worst sinner comes to Bhagavan to seek refuge. Bhagavan will never ever turn away such a person. What do we find? In our world, someone does something just to hurt our ego. Someone says something just to hurt our ego. Be prepared to, I don't want to see this person for the rest of my life. I don't want to speak to him or her. What Bhagavan is saying, if the worst sinner comes to me and seeks protection, I will never turn such a person away. But the word, the most important word in this chaupai here is those who do sharanagati, those who surrender. We can't say that we're going to do unethical actions and partially be surrender. If you do sharanagati, it must be done totally, without reservation. So anyone, even the greatest sinner comes to me and seeks refuge, I will never turn away such a person. This is the beauty of Vedic Dharma, pyare. And you know this concept, this word papi, when we explain the word papi, the closest English word we can find is sinner. And technically speaking, हम पापी नहीं हैं. We're not sinners. We just made wrong decisions. We have made wrong decisions. We have done some unethical actions. All of us. So we're not papi. When we realize our mistakes and we decide to turn a new page in our lives, so to speak, Bhagavan is ready to accept you. What is there to lose? In Bhagavad Gita, Bhagavan says, anyone who turns to me, anyone who seeks moksha, if you can't make it in this life, I will send you in an environment, pyare, where you will pick up from where you have left off. So what is there to lose? It's never too late to turn to Bhagavan. It doesn't matter how old or how young you may be. It doesn't matter your status in society. What's going on in your life? Sharanagati karo. It's never too late. Bhagavan will safeguard us from all those papas, all those negativities. But we must surrender totally. Sanmukha hoi jiva mohi javahi. The moment the jiva goes before, हम सब जीवात्मा हैं. जब परमात्मा के सामने जाते हैं तो एक ही बन जाते हैं. The moment we go before Bhagavan, the jiva comes before Bhagavan, the jiva essentially is Brahman. But the jiva is attached to the physical body, to the senses, and the jiva seeks happiness or joy in the material world. That's why it's called the jiva. The moment we renounce all of these things and we stand before Bhagavan, ap atma hai. Tat Tvamasi, the Veda says, Prajnanam Brahma. You are Brahma already.
Sanmukh hoi jiva mohi jabahi, janma koti agana sahita. For millions of lives, the papas we may have committed for millions of lives, those papas will be washed away in an instant. So we must surrender totally. Again, this is a very beautiful chaupai from Sundarkand. After Doha number 43, the first chaupai. Excuse me. Koti vipra badalaga hutahu. The worst sinner comes to me, I'm prepared to accept such a person. In certain traditions, the moment you do something wrong, that's it, you're going to hell. You're facing fire, you're facing hellstorm. You know those things in spirituality, if it doesn't sound right here, the heart can't accept it. If it doesn't sound right here, you can't accept it here. So religion, again, we have dharma, we don't have religion. But just for argument's sake, religion must cater for the head, the intellect, and the heart. And if you can't question what is written in religious books, then those books should not be used as spiritual books, if you can't question it. So the dharma must able to cater, or religion should cater for the head and the heart at the same time. Now we'll turn attention quickly to Bhagavad Gita. A similar statement made by Bhagwan Sri Ram in Bhagavad Gita, chapter 9, verse number 30. Sri Ram says, if the worst sinner comes to me, I'm prepared to accept that person. Shri Krishna ne kaha, api chet sudaracharo bhajanti mamananya bhak sadhureva samantavyah samyak vyavasito hi saha. Even the vilest sinner worships me with exclusive devotion, ananya bhak, ananya bhakti say. I'm prepared to accept such a person as a sadhureva, as a sadhu. But again, the true word lies, the most important word in this chaupai as well as this verse from Bhagavad Gita is sharanagati, surrender totally to Bhagavan. So what is there to lose? Nothing is there to lose. On this path of dharma, we have to make the first step towards Bhagavan. Just start. Tell yourself you surrender to Bhagavan. Prabhu, from now on, I'm going to change my lifestyle. You know, aap sab kuch jante hai. You know what's in my heart. You know what I've done in the past, Prabhu. But I want to turn a new page in my life, so to speak. So I'm going to do Sharanagati. Bhagavan is ready to forgive all of those mistakes. But what do we find? मुंह से बोलते हैं मैं शरणागति करता हूँ. It comes from the mouth, but it doesn't come from the heart. We must, when Sharanagati is done, it doesn't matter what happens in life. If your Shraddha is in Bhagavan, no devotee of Bhagavan punish. It may appear as if the person is going through difficulty, but when one totally surrenders to Bhagavan, the joy that you get within, you can't put it in words. Things happen in the external world. Remember, we all have prarabdha karma, pyare. We have to face the consequences of our prarabdha karma. We can't change that. But the beauty when we do Sharanagati, we have that inner composure. We have that equilibrium, that balance to deal with it. A person who does not do Sharanagati complains every moment. It doesn't matter how much money they have, how comfortable they may be, but there's no peace within. There's no shanti. There's only ashanti. So that's the difference between a samsari and a bhakta. And you know, people say it sometimes, Panditji, this person does so many unethical action, but how he or she is so successful. Anything the person does, the person is successful. The person seems happy. The person has all these material pleasures. हम लोग हमेशा हनुमान चालीसा बोलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है. We don't compare ourselves with papi. That's first and foremost. Those people are enjoying their prarabdha karma. Very quickly they'll exhaust their prarabdha karma, and then they have to face the consequences. The good thing for you, when we go, or for us, when we go through difficulties, that we're burning out our prarabdha karma. And we need to clean our prarabdha karma before we attain antahakarana shuddhi, before we attain purity of mind. So, a bhakta accepts whatever comes his or her way. Jahe vidhi rakhiram, tahe vidhi rahiye. Because Bhagavan knows our situation.
And a devotee, a bhakta, never punishes. Bhagavan will never see his devotees experience tremendous difficulties in life. He has to take our prarabdha into account. His invisible hand is always there, sheltering us. Bhagavan continues in Nata Chaupai. Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Rama, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Rama, Shri Ram Jai Ram. This is what we all need to realize Bhagavan. If we don't have this, we're only going through the experiences in life. Nirmal man jan so mohi pava. Nirmal man jan so mohi pava. Mohi kapat chal chedra na bhava. Mohi kapat chal chedra na bhava. Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Rama. Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Rama. Shri Ram Jai Ram. So Bhagavan said to Sugriva, the moment the jiva comes before me, the jiva becomes one with me. And it's a beautiful line from this Chaupai, Nirmal Manjana So Mohipava. This whole spiritual process is for us to purify our mind. So all the pujas, all the yatra, all the abhishek, all the bhajan, all these kirtan will bear fruit towards Nirmalman. So for millions of lives of bhajan, kirtan, seva, they will bear fruit where we acquire purity of mind. The moment the mind becomes purified, jnana comes like a flood of light. So if we don't purify the mind, we're only going through the process of life. The mind must be purified through kirtan, through bhajan. And there are different ways of purifying the mind. Some people choose to do meditation, but for most of us, it's difficult to do meditation. Dhyan is difficult, pyare. Sit and meditate on Omkar. The mind goes all over the place. But sit and sing Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Just like how we use all kinds of shampoo and soap to purify, to cleanse the external body. Ram Nam, Krishna Nam, Shiva Nam. The name of Bhagavan will purify the mind. So we must purify the mind. Again, the end total is not to go to heaven. With the exception of Vedic Dharma, every other tradition. अगर मैं गलत बोलता हूँ तो बताइए. If I'm wrong, please correct me. With the exception of Vedic Dharma, the goal of every other religious path is to go to heaven. Heaven कहाँ है? पता नहीं. And you know, this word ऊपर वाला, we don't accept ऊपर वाला. But still we speak it. ऊपर वाला means the one above. Bhagavan kaha hai? Bhagavan is nimit apadana karan. He is the knowledge and the material of this universe. Mujh mein Ram, tuj mein Ram. The whole creation, the Veda says, Atyatishta dashangulam. Ishwar pervades everything. Isha vasamidam sarvam. Yat kinchat jagatyam jagat. And still we follow other people and say, Uparvala. We should not use the word Uparvala. From a Vedic point of view, as a Vaidika, as a Sanatanist, you should not use the word Uparvala. We have to take that out of our vocabulary when we speak.
Use Ram, use Krishna. So if the mind is not purified, we can't find Bhagavan. Bhagavan is within Pyare. We all know that. I don't have to say this, you all know that. But what we don't want to purify the mind. We believe when I get this, I get that, I have X amount of balance in the bank, I have the fanciest car, the biggest home, those things are important. Please don't misunderstand me. Then I'll be happy. And when we're blessed with those things, we're the same person. It's like a child growing up is attached to a little truck. The child becomes a little older, the child wants a bicycle. The child becomes a teenager, the child wants a car. So the body matures at a certain age, but our mind remains, maybe, me too. Our minds remain like a little child. So we can't purify the mind. So Bhagavan is saying, Nirmal manjana so mohipava. The moment the mind is purified, we discover who we are. Mohi kapata chala chidrana bhava. Bhagavan is saying, I have an aversion for kapat, duplicity, aversion. Those people who play tricks, people who pretend to be things who they are not. Bhagavan has an aversion for those people. Mohi kapata chala chidra, people who find faults in others. And we all are guilty of these things, Pyare. On the spiritual path, we have to do self-introspection. If we have these qualities, we have to change them. If not, we can't get in the Ramalaman. So those who find faults on others, those who play tricks, those who are deceitful. With these kinds of qualities, we will never find who we are. And the sum total of this entire spiritual journey is to discover who you are. As Vairikas, we're all seekers. Look when Bhagavan Shiva and Parvati Ma discuss. Look how many questions he asked. She asked hundreds of questions, and Bhagavan Shiva gave her answers. Likewise, with all the Upanishads, Bhagavad Gita, the Shishya asks questions only. Question. I know in certain cultures, if you question, you're not allowed to think independently. You can't question. I usually say there is something for you to swallow. They give you something to swallow, don't question it. Khalo. If you question it, you know what happens. But in this dharma, all of these rishis, all these saints and sages, they answer questions of the rishishas. Look at the most profound discussion on a battlefield. And we say it sometimes, Panditji, when I go to satsang, some people like to say, it's nice to have big crowd for satsang, it's good. But look at the satsang between Bhagavan, Krishna and Arjuna. Kitne log the? Thousands of them were fighting. They were not conscious of this discussion. Keval Bhagavan, Shri Krishna or Arjuna the? Just two people are enough for satsang. Where the Shishya approach Upanishad, sits before the Guru with humility. The Guru sits on a higher seat. The Shishya sits on a lower seat out of respect and love for the Guru. Not only the Guruji, but the teaching as well, the tradition, and ask questions. And the Guru removes the doubt. So when our doubts are removed through Gyan, then we'll have Nirmalaman. If not, we have to come in this world, Pyare. Look how many times we have taken birth in this world. And there's no guarantee we'll come as a human being next time. So when should I gain moksha? Not when you retire, here and now. There's no better time. We should become seekers. Always tell yourself that you are a spiritual aspirant. You're a husband, you're a wife, you're a brother. Whatever relationship you have, do your dharma. Do your swadharma. But you're always a seeker of truth. Nirmala manjana so mohi pava, mohi kapata chala chidrana bhava. When the mind is purified, then the karmas that brought this body into existence will bear fruit. You become a jivan mukta. Again, some people believe that when we die, we attain moksha. It's a misconception. We must read the Upanishads, read Katha Upanishad to get a better understanding. We have to attain moksha while we're alive. All the Mahatmas, they attain moksha while they're alive. The body will fall,
Prarabdha karma brought his body into existence. You don't have control of the birth and the death of this body. That's within karma. But the moment the mind becomes purified and you attain oneness with Bhagavan, you attain moksha, when the body falls, it's in the hands of Bhagavan. The jiva will never take birth again. The spark of divinity becomes one with Ishvara. That's our goal. And we can only get it through Nirmalaman. Boliye Ramachandra Bhagavan ki jai, Pavan Sutta Hanuman ki jai. Sita Lakshmana Bharat Shatrugna Hanumat Samet Ramachandraya Namo Namaha. Shri Hanumate Namo Namaha. If Bhagavan asks you, while you're doing, imagine you're doing puja one day in your puja room or in the mandir, and this Akashvani says to you, what do you want, Pyare? What do you want, my child? What will you ask for? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. Bhagavan, if I have to come in this world again, may I always be a bhakt of yours. There is no better, there is no greater joy than being a das of Bhagavan. मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने दोनों ये हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने दोनों ये हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. अब तो कृपा कर कीजिए जन्म जन्म का साथ. देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे. श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे. मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. अब तो कृपा कर कीजिए जन्म जन्म का साथ. श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है. एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है. मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा तेरी दिन रात. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. The last verse says, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो. भगवान, हमने सुना था the those who do शरणागति आप गले लगाते हैं. Those who surrender to you, you hug them, प्यारे. You want to be hugged by Bhagavan? Hanuman ji did शरणागति when he met Bhagavan in Kishkindha Khan. And at the end of the discussion, Bhagavan hugged Hanuman ji. So if you want to be hugged by Bhagavan, शरणागति करो. सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो. ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो. Bhagavan, don't be startled. We just want to be touched by you. चाहे जैसे रख बनवारी, ओ बनवारी, it doesn't matter in what situation you place us. चाहे जैसे रख गिरधारी,
बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. Bhagavan, as a bhakta, we are patient. We are patient in the sense that we want to attain oneness with you, Prabhu. We'll do our dharma, we'll do our duty, and we know for sure one of these days we'll bless with your darshan. The moment you're blessed with Bhagavan's darshan, you become one with Bhagavan. Shri Krishna Yanamo Namaha Anchananandanam Viram Janaki Shokanashanam Kapishamakshahantaram Vande Lanka Bhayankaram. आओ भोग लगाओ प्यारे मोहन, आओ भोग लगाओ प्यारे मोहन, बिलनी के बैर सुदाम के तंदुल, बिलनी के बैर सुदाम के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ प्यारे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ प्यारे मोहन. Coming Tuesday is Purnima, and in the month of August there will be 2 Purnimas every year, one in 1 month. Last year was, I think, was in September. So the first is Purnima, the 30th is Purnima. 2 Purnimas in the month of August, and of course every Purnima or full moon in the evening there is Satyanarayana Bhagwan Puja in the mandir. So Tuesday there is Hanuman Ji ki puja hoti hai, or we'll do Satyanarayana Puja and Hanuman Ji's puja. So puja starts a little early so that we can finish in a timely way. Puja starts around 6:30, but the regular Hanuman Puja starts at 7 p.m. So try your best to come for Purnima and Hanuman Puja on Tuesday. Of course, we in Adhik Maas, and there's Puja Archana to Bhagavan Shiva every month in the evening from 7 p.m. Shri Sita Lakshmana Bharat Shatrughna Hanumat Samet Ramachandraya Namaha Shri Hanumate Namo Namaha. अभी आरती करेंगे. रामदूत कृपा सिंधो मत कार्यम साधय प्रभु. ओम राम 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 सीताराम. प्राप्येन्द्र सस्पते दरिद्र नीललोहिता येषां पुरुषाणां येषां पशूनामाभेर्मारोमो येषां किंचनाममत. We have also a camp going on for the youths. The youths of our mandir, they're conducting a youth camp for children, and it started 2 weeks ago, and I think there's a month more remaining, where the children are taught the basics of Hinduism. And of course, they have an opportunity to ask questions about Dharma. So if you like your children to be involved in camp, to learn more about Hindu Dharma, you know, as Hindus, when it comes to teaching our tradition, we do not take it seriously. Our friends from our culture, the moment the child starts talking, they imbibe the culture in the child. That's why no one can brainwash them and confuse them. No one can convert them. Because from a tender age, they're taught the tradition. They imbibe all the teaching. हम लोग क्या हो बच्चे हैं सो कोई बात नहीं हम लोग मंदिर जाते हैं. We leave the children at home, we go to mandir. They don't want to go. क्या करूँ पंडित जी? If you take them when they're small, they'll grow into the habit of going. And as parents, I'll say it blunt. If you do not take the initiative to teach your children, don't blame anybody when they become older, they get in trouble, and they don't want to practice dharma. Blame yourself as a parent first. Because if you do not take them when they're small, how they will learn? Our friends from other culture, they make sure they take them from a tender age. Whatever pratna you know, teach them Hanuman Chalisa, any prayer. Because we know the influence of this society. So that's why we're doing a little part of the mandir here. But if you don't bring your children and get them involved, Panditji kya kare? Main kya karu? We're here to serve, we're here to do seva. So you must get your children involved.
I know children will come, कोई बात नहीं, they'll make some noise, they'll run here and there, but when they come, they will learn how to sit and to be quiet during satsang. So you must take them. If you like to be involved in the camp, please speak to Arjun after Arati. Om Hanumate Namo Namaha. Anjananandanam Veeram Janaki Shokanashanam Kapishamakshahantaram Vande Lanka Bhayankaram. You know, very quickly, I want to share this. I saw a video and it bothered me. One youth was asking in a train station in Delhi. She was asking other youths very basic question about the Ramayana. Ramachandra kitne bhai the? How many brothers Sri Ramchandra had? And these are Hindu students, college students. They don't know. I felt really hurt. Who was Hanumanji's mother? नहीं जानते, but college जाते हैं, fancy कपड़े पहनते हैं, इनके धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं. तो हमारी भारत माता में ये होता है. They don't know the mother of Hanumanji. Don't know how many brothers Sri Ram get. Who went to Banavas with Bhagwan Sri Ram? They don't know. मैं तो रामायण नहीं पढ़ता हूँ. If you don't read Ramayana, क्या पढ़ती हूँ? If you do not read Shastra, what do you read? And again, certain things must be said with the force, so it registers in our mind. We have to do it, pyare, so that we change the things that we're not doing right, so we imbibe this culture in our children. Because if you don't teach them dharma, someone will teach them adharma. रामचंद्र भगवान की जय. करे हो जाइए, आरती करेंगे. आइए, कृपा करके ऊपर मत जाइए. When you do आरती, please don't go for safety reasons. Stand right before the altar and do आरती. आइए please, सबको आइए please. आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की. आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की. गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद. वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सनकादिशेष अनुसारद. सुख संकादिशेष अनुसारद. बरनी पवन सुत कीरति की. आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी. गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश. छहु शास्त्र सब ग्रंथन कोरस. शास्त्र सब ग्रंथन कोरस. मुनि जन धन संतन को सर्वस. मुनि जन धन संतन को सर्वस. सारा अंश समत सबही की. आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की. गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी. अरुघट संभव मुनि विज्ञानी. अरुगत संभव मुनि विज्ञानी. व्यास आदि कविवर जब बखानी. व्यास आदि कविवर जब बखानी. काग कुसुंडी गरुड़ के की. आरती श्री रामा
मलहरणी विषय रस फीकी शुभग सिंगार मोती जुबती की कलन रोग भाव मोरी अमी की तात मात सब मिथित से की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियती की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियती की सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम। सब खड़े हो जाइए, हाथ जोड़िए, सबको ऐसा करो। Put our hands nicely by our chest. Hey, Om Tvameva Mata Cha Pita Tvameva Tvameva Bandho Cha Sakha Tvameva Tvameva Vidya Dravino Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Mantrahinam Kriyahinam Bhaktihinam Janardana Yat Pujitam Maya Deva पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए